Good evening, everyone. Thank you very much, Sun Pharma, for inviting me to talk on prostate cancer, the basic understanding and treatment for the community itself. Myself, Dr. Makaran Khujekar, I'm a consultant urological oncologist based in western part of Maharashtra. I'm here for last almost 25 years, having been trained in UK, and we started urological oncology specialty in this part of the world way back in 1998. So greetings from my both the hospitals where I'm working, Siddhivanai Ganpati Cancer Hospital and Ushakal Urological Hospital. These are the two hospitals. This is Siddhivanai Cancer Hospital. The state-of-the-art urological cancer services are provided in this hospital. And another hospital where I'm working is Ushakal Hospital, Sangli. As the man reaches its goal, nothing is more sadder than the man who is master of his soul is servant to his bladder. One of the great visionary, Sir James Hadfield, with whom I worked in England way back in 1990s, had put up this sort of a picture on his screen. And he always felt that we achieve everything in the life, but as you start getting older, the prostate problem gives you so much trouble, the people get frustrated. मैं हिंदी में भी थोड़ी सी बात करूंगा लोगों के लिए। जैसे उम्र बढ़ जाती है, आपको लगता है कि आप लाइफ के कंट्रोल में हो, लेकिन जब प्रोस्टेट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकता है। तो आज के टॉक में हम आज बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इट्स प्रॉब्लम्स, व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। Senior citizens, as we grow older, above 60, we keep on looking for a peaceful life after retirement. हम लोग जानना चाहते हैं कि लाइफ कैसा रहता है रिटायरमेंट के बाद। We want peace, we want to travel, we want to go all around and do a lot of things in our life. लाइफ में जो कुछ डिसाइड करना चाहते हो, वो रिटायरमेंट के बाद lot of plans are there, but as you start getting older, hypertension यानी blood pressure, diabetes, heart problem, कैटरैक्ट यानी मोती बिंदु, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स एक के बाद शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ में जब यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आफ्टर द रिटायरमेंट लॉट ऑफ पीपल आर रियली कंसर्न। जब सब लोगों से मैं बात करता हूँ, जब प्रोस्टेट प्रॉब्लम से आते हैं, लोगों का कहना यही रहता है, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, बट नाउ यू सी आई हैव गॉट अ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आई हैव गॉट अ प्रोस्टेट प्रॉब्लम। Now tell me what is my quality of life? Extreme लोगों की reaction ये भी रहती है, why me? The other thing, the ground reality, the real life scenario, a lot of people who have pension, who do not have economical resources, financial situation जिनकी अच्छी नहीं है, उनको भी ऐसा लगता है ये सब बीमारी के लिए cost of treatment. That is another thing which is sitting on their mind. बाकी लोगों को ये भी पूछना रहता है कि एज रिलेटेड प्रोसेस है और ये कोई दूसरी बीमारी है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने का मेरा आज थोड़ा सा प्रयत्न है। प्रोस्टेट ऐसे बात करने से, और व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोस्टेट प्रॉब्लम, व्हेन पीपल कम विथ यूरिनरी सिम्पटम्स, दीज आर डिफरेंट रिएक्शंस। द मैन हू हिमसेल्फ इज सफरिंग, ही इज वरीड, he doesn't want to talk because he's going to toilet every now and then. Sometimes he can wet himself. He's struggling to pass urine. Sometimes, as people who are educated, people want to know, people hear about the social media, they keep on thinking, is there a possibility I have a prostate problem? Do I have, or do my partner have any element of cancer? Now, what is prostate? ये prostate चीज होती क्या है? हर आदमी को ये prostate gland रहती है। ये जो पेशाब का थैला यानी हम ब्लैडर बोलते हैं, उसके बेस में ये पी साइज एक छोटी सी ग्लैंड रहती है। पेशाब यहाँ से इकट्ठा होता है, यूरिन गेट्स कलेक्टेड हियर एंड द यूरिन कम्स आउट थ्रू दिस ट्रैक्ट। So at the base of bladder there is a gland called as a prostate gland. So every man has a prostate gland. Now what happens? ये prostate gland में कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार इसमें प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट यानी उम्र के मुताबिक ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ भी सकती है, और कई बार इसमें कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। काफी लोगों ने प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कुछ रिपोर्ट सुना होगा या देखा होगा,
when you see ultrasound report, the normal weight of the gland is less than 20 grams. Size यानी weight हम बात करते हैं at the age of 20. After the age of 50, 50 उम्र के बाद वो ग्लैंड हल्के हल्के बढ़ना शुरू हो जाती है और वो साइज बढ़ने से, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से पेशाब के रास्ते में या ब्लैडर के आउटलेट में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं. This can be age-related problem, but sometimes this can be cancer, and that is what we are talking today. Now, incidence of the prostate enlargement, like इस उम्र में सब लोगों से मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, at the age of 60 जैसे बाल सफेद होना शुरू होता है, मोती बिंदु यानी कैटरैक्ट हो जाता है, वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब के थैले के निचले हिस्से में जो रहती है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू होता है. Once this gland enlarges, you can see the incidence also. 50 उम्र में 50% लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड में बढ़ोतरी यानी साइज इंक्रीज हो सकता है. 60 एज में 60% लोगों को हो सकता है. 70 एज में 70% लोगों को हो सकता है. 80, 90 के बाद वो भी बढ़ जाता है. तो ऐसा आप अकेले नहीं हो. You are not the only one, but a lot of people can get the prostate problem. Now, prostate problem यानी this gland वो जब बढ़ जाती है, so this can be a 20 gram, 30 gram, 100 grams. We have removed this gland operation करके almost up to 300 to 400 grams. So you can imagine ये gland कितनी आगे जाके बढ़ सकती है. जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल जेटा है, ये ब्लैडर रहता है, यूरिन इकट्ठा होता है. ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको यूरेथ्रा के बीच में बात ऐसे बता रहा हूँ, और वहां से यूरिन बाहर से निकल जाता है. जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू होता है, तब ये पेशाब का जो रास्ता है, जो यूरेथ्रा बोलते हैं, that gets narrow, and that's why people struggle in passing urine. यानी कि जब पेशेंट यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है. His partner keeps on telling ये बाथरूम में जाते हैं तो काफी टाइम जाते हैं. You strain while passing urine, and sometimes you're not able to empty urine or bladder properly. आगे की स्टेज में जब ग्लैंड ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशाब अंदर इकट्ठा होना चालू होता है, एंड एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि one day you can land into complete blockage of urine, which we call as a retention of urine. ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम्स होते क्या है? दो तरीके के सिम्टम्स रहते हैं. We call as obstructive symptoms, and another symptom what we call as an irritative symptoms. Why we need to have a clarity on this? Because in general इस उम्र में जब यूरिन के सिम्टम्स आना चालू होता है, सब लोगों को लगता है जो कुछ प्रॉब्लम है सिर्फ प्रोस्टेट और प्रोस्टेट के कारण से है. वैसा नहीं है. ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम जैसे मैंने बताया, ये जब ग्लैंड जब पेशाब के थैले में नीचे से ज्यादा बढ़ना शुरू होता है तो यूरिन की पाइप ब्लॉकेज होना शुरू होता है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग पुअर फ्लो यानी पेशाब की धार पतली हो जाती है. स्ट्रेनिंग यानी स्टार्ट स्ट्रगलिंग इन पासिंग यूरिन. एक बार पेशाब होने से पूरा हुआ नहीं ऐसा भी लगता है, एंड समटाइम्स व्हेन यू गो यू डोंट इनिशिएट योर एक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड यू स्ट्रगल टू पास यूरिन. दूसरी चीज, ये होने के कारण से भी बार बार जाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है. कई बार बाथरूम को जाते वक्त भी कपड़े में पेशाब निकल जाता है और रात को बार बार उठना पड़ता है. समटाइम्स ये जो सिम्टम्स है ये बिना प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट भी हो सकते हैं, जो स्त्रियों में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकता है. उसका कारण कई बार प्रोस्टेट की बीमारी नहीं रहती है. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ब्लैडर डिस्फंक्शन. कई बार लोगों को पेशाब को बार बार जाने से कारण से अगर लगता है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन से फायदा होगा, तो उनको प्रोस्टेट के ऑपरेशन से फायदा होता नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है बार बार पेशाब को जाना, कंट्रोल न होना, ये ब्लैडर के फंक्शन के प्रॉब्लम से होता है. ये अगर ज्यादा बढ़ जाए प्रोस्टेट ग्लैंड तो एक दिन ऐसा होता है कि यूरिन पूरा ब्लॉक होकर रिटेंशन यानी यूरिन अंदर पूरा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है. प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम होने से अबाउट 50-60 कौन सी टेस्ट करना चाहिए, व्हाट टेस्ट वन शुड डू, एंड आई थिंक इट्स जस्ट नॉट ओनली वन टेस्ट, यू नीड टू डू ऑल द टेस्ट. कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं, कोई सीनियर लोग हैं, वो बात करने में बताते हैं, डॉक्टर साहब आपने इतने टेस्टिंग सब बताए, हमारे पुराने टाइम में जब नाड़ी देखे, पल्स देखे, सब यूरिन देखे निदान हो जाता था. व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस टेस्ट? एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. Don't go by what media says. Don't go by what it comes on WhatsApp and internet, that doctors are making money, they want to do lots of tests. If you have one problem, it is better to understand what this problem is
and then take it further. So अगर पेशाब के प्रोस्टेट के ग्लैंड के और यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं तो हम टेस्ट करवाने के लिए बोल देते हैं these are some blood test, some sonography and some x-rays and a flow test. ये जो ब्लड टेस्ट रहता है उसमें आपका हीमोग्लोबिन कितना है, किडनी फंक्शन कैसा है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन है क्या और आपको डायबिटीज है क्या, ये बेसिक टेस्टिंग तो करवाना जरूरी है. उसके बाद में एक जो ब्लड टेस्ट रहता है हम उसको बोलते हैं PSA, मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. ये आपने सुना भी होगा. ये टेस्ट क्या रहती है? ये टेस्ट में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन है या कैंसर है या उम्र के मुताबिक होने वाली बिनाइन ग्लैंड है, इसका निदान थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो आपने किसी डॉक्टर ने, किसी ने आपको अगर सलाह दी होगी कि आपको ये सिम्टम्स सुन के ये कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप ये मेडिसिन ले लो, तो ये गलत चीज है. दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. If you have prostate cancer and if it's not detected by these blood tests, then you can miss the diagnosis and you can lose a chance of getting cured. So before you start any treatment, I think these tests are extremely important. उसके बाद में एक सोनोग्राफी करने के लिए बोल देते हैं, किडनी कैसी है, प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी बड़ी हुई है, उसकी आकार कितनी है और उसके साथ में पेशाब अंदर कितना रुकता है ये भी मालूम हो जाता है. उसके बाद में हम एक फ्लो टेस्ट भी करा लेते हैं. PSA टेस्ट के बाद में कई लोगों में कंट्रोवर्सी है. आप इंटरनेट पढ़ो, गूगल सर्च करो. lot of people say it is not prostate specific antigen, it means perspiration, stress and anxiety. It is not. This I think is the best discovery in the millennium, and there was a guy called as Thomas Tamey, credit goes to him, who put this sort of test into clinical practice. He was from America. The normal range is between 0 to 2.5 and PSA result in isolation, सिर्फ PSA टेस्ट की है तो प्रोस्टेट कैंसर का निदान नहीं होता है, उसके साथ में हम काफी भी टेस्ट कर लेते हैं. तो PSA टेस्ट एक बात है. उसके बाद में हम एक टेस्टिंग करा लेते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन. उससे मेरे को पता भी लगता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी बड़ी हुई है. एंड बाद में एक हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी बोलते हैं. आजकल हम MRI टेस्ट करके भी उसमें कैंसर है कि नहीं मालूम कर लेते हैं. ये जो सोनोग्राफी है उसमें प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है ये थोड़ी सी पता चलता है. और जैसे मैंने आजकल बताया कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है ये PSA से भी मालूम पड़ता है. उसके साथ में आजकल हम मल्टी पैरामेट्रिक MRI बोलते हैं. रूटीन MRI नहीं है, ये स्पेशलिस्ट MRI है. उससे भी पता चलता है कि उसमें कुछ कैंसर है या नहीं है. इसमें अगर संभावना आ गई तो हम आगे जाके इसकी बायोप्सी भी करा सकते हैं. ये जो फ्लो टेस्ट रहता है, इट इज समथिंग लाइक अ कार्डियोग्राम व्हेन यू डू इट फॉर हार्ट डिसीज. इसमें हम क्या कर लेते हैं, पेशेंट की पेशाब की धार कैसी है मशीन पे चेक करा लेते हैं. उसके साथ में पेशाब अंदर कितना रुकता है, हाउ मच इज द फ्लो, हाउ मच इज द यूरिन यू आर पुटिंग बिहाइंड, दैट इज ऑल कैलकुलेटेड ऑन दिस ग्राफ. Now, a lot of people ask me, I have a prostatic enlargement, my test is normal, PSA test is normal. Do I need an operation? Do I need any treatment? The simple answer is, it all depends on your symptoms and the test. If you do not have any symptoms, मतलब रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग किया है, आपने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप किया है, उसमें अगर लगा कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ज्यादा नहीं है, मेरे एग्जामिनेशन के बाद सिम्टम ज्यादा नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर फॉलोअप करा लीजिए. अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है, यूरिन पास करने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हो गए हैं, यूरिन अंदर ब्लॉक हो रहा है, बार बार जाना पड़ता है, इन्फेक्शन हो रहा है और आपका PSA टेस्ट एबनॉर्मल है, तो आपको पूरी की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करना जरूरी है. अगर इसमें कैंसर नहीं है, तो PSA टेस्ट नॉर्मल है, MRI नॉर्मल है, सोनोग्राफी नॉर्मल है, कई बार माइल्ड सिम्टम्स में हम टैबलेट्स दे देते हैं. उससे प्रोस्टेट का साइज भी छोटा हो सकता है, आपको यूरिन पास करने में भी दिक्कत नहीं आती है. अगर आपको सर्जरी करने की जरूरत है, we don't do any surgery like an open surgery. Most of the surgery is done endoscopically. It's like in this guy, we have done operation through the endoscope by using a laser treatment, electrocautery, and this is a standard care of treatment. आपको अगर किसी को भी नहीं बताया नहीं ऑपरेशन नहीं है, आपको दवा से मैं ठीक कर सकता हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है. अगर जिनको सिम्टम्स कम है, जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उनको भी दवा का सिर्फ असर हो जाता है. लेकिन दवा लेने के पहले आपको ये मालूम करना है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, आपका PSA नॉर्मल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड कॉस्ट भी है. आप कितने दिन ये ट्रीटमेंट लेते रहो,
अगर जरूरत पड़े, अगर जरूरत है, then no sort of point in wasting time and get the operation done. दवा लेने से मैं बार बार बता रहा हूं, तो आपके डॉक्टर से ये सलाह लेनी चाहिए कि मेरे PSA टेस्ट हुई है नहीं है, उसमें कैंसर नहीं है, तभी ये दवा देके एज के मुताबिक जो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हुई है उसका इलाज हम कर सकते हैं। द ऑपरेशन जैसे मैंने बताया, हम एंडोस्कोपी से करते हैं। इट इज डन थ्रू द यूरिनरी रूट। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट वी कॉल एज अ TURP, where we remove the prostate from inside, clear the passage, and patients do very well. तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट अंदर चला जाता है और ग्लैंड पूरी की पूरी क्लियर कर जाती है। So this is, you can see, this is the blockage into the urinary passage. I've done the operation during surgery, and you see it's completely done, and the patients do very well. There are a lot of questions people have in the mind when they come for a prostate operation. Is there a cut on my body? I'm talking about non-cancerous prostate, what's called as a benign prostate. There is no cut on your body when I do endoscopic operation. It takes about an hour or so. How long I stay in the hospital? 3 to 4 days. Do I lose control on the urine? If you're done by an expert person, it's usually not. Does it recur again? Mostly not. If it is done in inexperienced hand, inappropriate places, inappropriately done, certainly you have a problem. And would I be normal again? Of course, yes. We do nearly 600 to 700 TURPs every year, and I'm doing it for last almost 25 years, and the results are really, really good. Before surgery, in elderly patients, there are a lot of risk involved, because half of these patients would have diabetes, blood pressure, stroke, paralysis. They are on blood thinners. So it has to be done in an expert place, safe hands, and specialist care. Don't go by, ये मेरे सामने ही है दवाखाना, ये हॉस्पिटल छोटा है, ये करना है. Don't do that. Once in a lifetime operation, get it done by the expert person. What if I do not do a surgery, only rely on medicines? You can have kidney failure, you have infections, you can have stones. You see, you can count how many stones patient has in the bladder. So this can happen with a neglected prostatic enlargement. Now we are coming to a topic which is called as a prostate cancer. If I had not talked to you about what is prostate, which is benign, you would not have understood what is prostate cancer. So the gland is same. The prostate, everybody man has it. In young age, you get infections, what we call as prostatitis. In middle age, or sort of after 50, you get either benign, which is age-related process, or you can get a prostate cancer itself. Now, myths of the prostate cancer. लोगों को ये भी मालूम पड़ता है कि ये क्या है. लोगों को ये समझता है कि it occurs only in elderly people. No, it can sort of occur in any age. Maybe it starts at the age of 50. It is not age-related process. कई लोगों का ये मानना है, पुराने जो डॉक्टर्स है, पुराने जनरल प्रैक्टिशनर्स है, पुराने ट्रेनिंग हुए हैं, उनको ऐसा लगता था लिटरेचर में कि इट इज एज रिलेटेड प्रोसेस, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट इट इज नॉट. कई लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने ऑपरेशन बताया, एंडोस्कोपिक सर्जरी कर लीजिए, उसमें निदान हो जाएगा. उसमें होता नहीं है, क्योंकि जो एंडोस्कोपी में ऑपरेशन करते हैं तो प्रोस्टेट के अंदर का जो कुछ एनलार्ज बिनाइन रहता है वो पार्ट निकल जाता है, लेकिन बाहर का जो पेरिफेरल जोन बोलते हैं उसमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है. तो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन से आपका निदान भी नहीं हो जाएगा और आपका इलाज भी नहीं हो जाएगा. एंड समटाइम्स पीपल फील द टेस्टिकल्स, जिसमें हार्मोन्स रहते हैं, वो अगर निकाल दे तो कैंसर नहीं हो जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं. इट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट इज राइट? प्रोस्टेट कैंसर कैन ऑकर टू एनीबडी अबव द एज ऑफ 40. एक पुराने जमाने में एक स्टडी भी हुआ था. जिन लोगों को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुआ था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम डॉक्टर सैकर था. उन्होंने जो कुछ पेशेंट्स के जिनके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए थे, उनके पोस्टमार्टम स्टडीज में ये मालूम किया था, at the age of 40 there was nearly 25% chance they had a microscopic process of prostate cancer. They had no symptoms. Then at the age of 50, around 30%. At the age of 60, around 50%. At the age of 70, around 70% chance of having a microscopic focus. And that's why the whole evolution of prostate cancer has taken place over the period of time as such. Endoscopic operation is not a treatment for prostate cancer. And before you treat each and every patient, we have to rule out prostate cancer before taking any treatment. Why do we get prostate cancer? Age, family history में भी हो सकता है. There is one BRCA gene which is called as responsible for prostate cancer. People who are obese, taking fatty diet, lot of non-vegetarian food can get prostate cancer. Western lifestyle, and there is a family history of other cancers. जैसे मैंने बताया, at the age of 40, 50, 60,
what are the chances? So nearly half, 60-70% people can have an incidence of prostate cancer. Now, each and every person above 50 years age, when he goes for a health screening, he should be evaluated prostate cancer के लिए. और जैसे मैंने बताया, it's not only PSA test. I examine these people, do a transrectal ultrasound scan, and if there is anything abnormal, PSA abnormal हो, एग्जामिनेशन में मेरे को लगता है कि ग्लैंड में कोई एबनॉर्मलिटी है और सोनोग्राफी और एमआरआई में कुछ दिखता है, तो उसका बायोप्सी होना जरूरी है. हम कई तरह से बायोप्सी करते हैं. एक 6 कोर बोलते हैं, 12 कोर बायोप्सीज, 24 कोर्स. उसमें ये मालूम होना चाहिए कि कैंसर है नहीं है, कौन से स्टेज में, उसका स्कोरिंग सिस्टम भी हम उसके साथ में निकाल लेते हैं. अगर मानो उसमें बायोप्सी में कैंसर रिपोर्ट आ जाता है, तो देयर आर सर्टेन स्टेजेस. देयर इज स्टेज 1 which is prostate, बहुत छोटा कैंसर रहता है, limited to the prostate. स्टेज 2 में थोड़ा सा बड़ा रहता है, but still limited to the prostate. स्टेज 3 में प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर जाना चालू होता है, वहां आसपास के स्ट्रक्चर्स में, लिम्फ नोड्स में जा सकता है. लेकिन स्टेज 4 में अगर वो बोन्स में चला जाता है, बोन्स इज कॉमन टारगेट वेयर प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड्स एंड लिम्फ नोड्स, ये 4 स्टेजेस रहते हैं. स्टेज 1 एंड 2 जो प्रोस्टेट से लिमिटेड रहता है, उसमें आउटकम अच्छा रहता है. 3 में थोड़ा सा खराब रहता है. स्टेज 4 में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग आजकल नए नए तरीके से उसका इलाज कर लेते हैं. अगर मानो प्रोस्टेट ग्लैंड से स्टेज 1 और 2 हम बोलते हैं लिमिटेड अगर कैंसर है, तो हम ऑपरेशन करा के, ये जो पहला मैंने ऑपरेशन दिखा है एंडोस्कोपिक ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नहीं है, उसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी बोलते हैं. वो क्या है मैं बता देता हूं. अगर पेशेंट ऑपरेशन नहीं चाहता है, तो हम कई बार रेडिएशन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. अगर पेशेंट का थर्ड स्टेज में चला जाता है, इफ इट इज थर्ड स्टेज, वी गिव हिम रेडियोथेरेपी एंड सम हार्मोनल थेरेपी. अगर जैसे मैंने बताया, इंडिया में कई बार निग्लेक्ट होने से, कई बार पीएसए टेस्ट ना होने से कई लोग स्टेज 4 में चले आते हैं. बोनी पेन्स रहते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बैक एक रहता है, तो सडनली पता चलता है प्राइमरी प्रोस्टेट कैंसर था. उसमें हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, काफी नए ट्रीटमेंट्स आए, आजकल हम देते हैं. अगर कैंसर मानो हो गया भी, अगर वो पहले स्टेज में हो, दूसरे स्टेज में हो, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से 90 to 95% ऑफ पीपल कैन सर्वाइव, कैन बी अलाइव फॉर 15 इयर्स. ये अच्छी बात है. अगर एज 70 में अगर ऑर्गन कन्फाइंड प्रोस्टेट निकलता है कैंसर, हमने इलाज बराबर किया, तो ऑलमोस्ट 90% पीपल वुड बी क्योर. अगर आपका सी स्टेज हो, 50 to 60% पीपल सर्वाइव फॉर 10 इयर्स. अगर ये चौथे स्टेज में चला जाता है, पहले हम लोगों को लगता था कि ये लोगों को लाइफ स्पैन अच्छा नहीं देता है, they may not survive for more than 2.5 years, but now we have a lot of life prolonging treatments where people can survive for almost like 4 years, 5 years with different kinds of treatment. जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर वो प्रोस्टेट से लिमिटेड है, तो हम ऑपरेशन करते हैं, उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी बोलते हैं. ये जो प्रोस्टेट है, वो एंडोस्कोपी से करना अलग है, और ये ऑपरेशन करके ये प्रोस्टेट, उसके सेमिनल वेसिकल्स, ये पूरा का पूरा पार्ट निकाल दिया जाता है. ये देखो, ये एमआरआई है, एमपी एमआरआई, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हम पूरी की पूरी ग्लैंड निकाल देते हैं. और ये जो ब्लैडर है, दैट इज जॉइंट अगेन बैक टू द यूरेथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल प्रोस्टेक्टमी. ये ओपन तरीके से किया हुआ ऑपरेशन है, काफी टेक्निकली चैलेंजिंग रहता है. आपको 10-15 साल का सड़क अनुभव रहना चाहिए. यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस, and done only in a specialist, by a specialist, and only in a specialist center. You do not try it in a smaller hospitals or people who are inexperienced. So this is a prostate seminal vesicles which is removed. ये जैसे मैंने बताया, जो ब्लैडर है उसको रीफैशन कर लेते हैं, और वैसे जो ब्लैडर है दोबारा अंदर वहां वो एनास्टोमोसिस यानी ज्वाइन करा लेते हैं. इस तरीके से ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पूरी की पूरी निकाल देते हैं. सेमिनल वेसिकल्स, वास, लिम्फ नोड्स, ये पूरा करना जरूरी है. ये देखो, जैसे मैंने आपको एमआरआई बताया, ये एमआरआई है, ये ब्लैडर, ये प्रोस्टेट, और ये पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर जो है, ये मैंने निकाल दिया है पूरा का पूरा जो है, और दोबारा ये ब्लैडर यहाँ यूरेथ्रा से वहां ज्वाइन किया रहता है. समटाइम्स पेशेंट्स का सेक्सुअल लाइफ खराब ना हो, इसीलिए हम उसके नर्व प्रिजर्व भी कर लेते हैं, तो पेशेंट्स को आगे जाके सेक्सुअल लाइफ में दिक्कत नहीं आती है. जैसे मैंने बताया, ये हाईली स्किल्ड ऑपरेशन है, ये एक्सपर्ट हैंड्स में होना चाहिए. जिन लोगों के साथ में जो सर्जन एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा ये तरीके से ऑपरेशन करता है, उससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा. आप साल में 3-4 बार ऑपरेशन करने वाला है इस तरीके के, तो रिजल्ट नहीं आएगा. तो इसीलिए पीपल हु आर एक्सपीरियंस,
people who have experience centers, like we do nearly about 100 radical prostatectomies on and off. तो उसके लिए जो कुछ करना है, I mean, till date we have done nearly huge number of cases. तो उसके लिए जो है यून का कंट्रोल आना, कैंसर कंट्रोल आना, वी कॉल एज अ ट्राई इफेक्ट, पेंटा इफेक्ट, ये आएगा अगर आप एक्सपीरियंस हैंड से करवा दो। अगर पेशेंट का डिसीज तीसरे स्टेज में है तो ये रेडिकल ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है। एक बात मैं बोलना भूल गया, जैसे मैंने ओपन ऑपरेशन दिखाया वैसे लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप अगर ओपन ऑपरेशन करो, रोबोटिक ऑपरेशन करो, आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज डन बाय द एक्सपर्ट पर्सन। थर्ड स्टेज में जाए तो देयर इज नो रोल ऑफ रेडिकल ऑपरेशन, उसमें हम रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ में हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। ये रेडिएशन मशीन है, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी हैज कम, एंड दिस ट्रीटमेंट गोज ऑन फॉर ऑलमोस्ट 6 weeks. Patient doesn't have to stay in the hospital. He comes and gets radiation on the OPD basis. We give some drugs called as ADT or hormonal therapy, and patient का रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। उसके साथ में जो हार्मोन्स लेते हैं, साल 2 साल में लेना पड़ता है, रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। अगर फाइनल स्टेज में पेशेंट जाता है, चौथे स्टेज में, ये भी होपलेस सिचुएशन नहीं है। हम लोगों को कई इंफॉर्मेशन देके इलाज करके लाइफ प्रोलॉन्ग करा सकते हैं। ये जो प्रोस्टेट कैंसर रहता है, उसका जो मूल रहता है वो हार्मोन्स में रहता है। तो हार्मोन्स तैयार होता है टेस्टिकल में, तो कई बार टेस्टिकल्स पूरी की पूरी रिमूव करने से वो हार्मोन्स सब निकल जाते हैं। अगर कोई नहीं चाहता है तो बिना सर्जरी, बिना रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, हम उसको इंजेक्शंस दे सकते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस, व्हिच इज कॉल्ड एज एंटी एंड्रोजन्स, LHRH एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंड सम टैबलेट्स, एंड इनका इफेक्ट भी सेम रहता है। Only thing is these are slightly expensive drugs. और एक बात, एज ज्यादा बढ़ने से कई बार बैकएक हो जाता है, तो लोगों को लगता है अरे स्पाइन का सर्जरी प्रॉब्लम होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बट मेनी टाइम्स प्रोस्टेट कैंसर बोन्स में स्प्रेड होने के कारण से ही एट द एज ऑफ 60, बियॉन्ड 60 you can have this disease. So elderly people with a backache, you should think of prostate cancer. Friends, it was wonderful to interact in both the different languages. Thank you, Sun Pharma, for giving me this opportunity for a patient education. But I repeat and say, as the age advances, everybody goes through this phase. At this sunset, when everybody is going into the geriatric stage, he may be poor, he may be rich, he may be civilian, he may be coming from villages, but I think what you need is care. Extremely important. And I think both the partners, when they are at this age, the care is going to be extremely important. Whatever language I'm explaining, it may be English, it may be Hindi, it may be regional language, I think the message has to go loud and clear. We have to care for your health. Prostate health is important, and you need to screen all your prostate for prostate cancer. What is important is adding colors to your life rather than having this life as regular as that. We all are going to be old. So it is said that old is gold, but one day we all will get old. So learn to take care and hold. It's me today, you be some other day. That's what my patients say. Thank you very much. I really enjoyed talking to you guys. If you have any queries, any remarks, any questions, you can shoot me an email on kochikar@gmail.com. My website is www.mkochikaruroncology.com, and you can always connect me with this. Thank you once again. I'm more than happy to answer your questions. आपके कोई भी questions हो तो मैं आंसर करने के लिए राजी हूँ. Thank you. I'm just going to go into the chat box and I'm going to answer some of these questions. One question is, which group is affected by prostate cancer? So as I told you, there is no immunity for a prostate cancer. At the age of 50, there is chance that you will harbor a microscopic focus. So there is no age which is immune to prostate cancer. The risk increases as the age advances. Sir, is it the prostate cancer age related? Partly yes and partly not. It is not simply the age related process, but you can get it if you have a family history. As I mentioned in my talk, if you're obese, if you have high sort of BMI, if you have high Western lifestyle, there is a chance that you may develop a prostate cancer. Is it genetic? Yes, certainly yes. There is an entity called as the BRCA gene. There is a lot of genetic workup which has been done.
and it is having a genetic sort of a role itself. Now, let me see, there are some more questions on this. At what age should we preventive diagnostic test to check for a prostate cancer? As I mentioned in my talk, I think after the age of 50, you should see your doctor, and as I said, you should get one routine blood test, one sonography of the kidney, urethra, and bladder, and a test called as a PSA test. And some question is here, how to differentiate between the prostate cancer and BPH. I think symptoms in both these conditions are more or less same because it is the blockage. In case of prostate cancer, sometimes you get surprised. You may not have any symptoms in early stage. But what is important is in advanced stage, as I said to you, you may get a back pain because of the spread into the bones. You may get leg edema because of lymph node enlargement. You can get blood in the urine. These can be symptoms suggestive of prostate cancer. But difference is basically more or less same symptoms. And we differentiate by doing a PSA test, a clinical examination, we call as a rectal examination, and MRI, as well as a transrectal ultrasound scan. Now, there is no precaution to avoid prostate cancer. There is no precaution for prostate cancer as such. I think just try and sort of be on a vegetarian diet. That is extremely important. Next question is, any precautions to be taken in individual to avoid prostate enlargement at the age of 50? There is a lot of work which has been done, and a lot of sort of drugs like pumpkin seeds. People have used a lot of plant extracts to have reduction in the size of the prostate. But these are sort of drugs which are called as a phytotherapy. It does not reduce the risk of prostate cancer, but it may reduce or slow down the prostate. But they are not replacement for standard medical treatment or a surgery. Now, can prostate cancer affected person live normal life with medication? Yes, absolutely. No issue at all. As I told you, if once somebody gets some cancer, which is at the age of 60, and he has a stage 1 or stage 2 cancer, I showed you in my slides, there is 90 to 95% chance that he will lead a normal life for 15 years. That's pretty good. Even if it is stage 3, he will lead a normal life. Only if it's stage 4, then perhaps they will have struggling sort of having extended life as said, but the new drugs are there which can give a good quality of life. Now, there is one question here. Can BPH lead to prostate cancer? I don't think so. Patients can have a benign enlargement as well and a prostate cancer as well. See, the benign enlargement usually come in an inside zone of the prostate, what is called as a transitional zone. I showed you one picture, the bladder, and then you have at the base of bladder, the prostate, and the urethra through which the urine comes out. When the prostate enlarges, suppose the prostate is like this, both the lobes are like this, the inside portion usually have something called as a benign enlargement. And the outside portion, what we call as a peripheral zone, that usually has a cancer. And so these things can be associated, but prostate cancer comes in a different area of the same prostate, and the benign area comes from a different area. What is the role of radiation in prostate cancer? As I said to you, if somebody does not want a surgery in stage 1 and 2, you can have radiation to the prostate. A lot of advancement has taken place in radiotherapy techniques and machines. And obviously, if the patient is not in a state of doing surgery for a locally advanced disease, we give them radiation. Sir, will my smoking and drinking habit going to affect prostate cancer? Absolutely yes, answer. Smoking is hazardous, drinking is hazardous. Both are prone to not only develop prostate cancer, but a bladder cancer, kidney cancer, lung cancer. So obviously not. I don't think you need to sort of have any doubt about it. These things have to be stopped, and you cannot sort of have smoking and drinking going on and not to get sort of immune to the prostate cancer. Another question is here, this can be cured. Obviously, it can be cured. I think I won't repeat that answer. I told you. What is the goal of each treatment? Is it to eliminate the cancer, help me feel better, or both? I think the answer to this is the goal of the treatment, first of all, is cure. And I repeat again many times, if it is a stage 1 disease, meaning the prostate cancer is limited to the prostate gland, you have a highest chance of getting cure. So my goal in stage 1 and stage 2 is to cure the patient. If the patient is in a stage 3, then again my goal is to cure you as far as possible and extend your lifespan.
But if you are in stage 4, we are not talking of cure as such. What do you mean by cure? The disease goes completely away after the treatment. That is called as cure. Or the cancer is completely eradicated. That is not possible in stage 4 and partly in stage 3. So what we do in a stage 4, we do hormonal blockade, as I told you, removal of the testes or injections which are equivalent to that. And now there are a lot of life prolonging medication. And if we do that, I think you won't be cured, but certainly you will be cared properly. If the cure is not possible, the care is possible and is extremely important. In hindsight, if somebody has a stage 4 disease, you tell me how many cancers people survive for 5 to 6 years. In this situation, at least we know what is the disease and we can treat it accordingly. How will this treatment affect my daily life? Will I be able to work? Obviously, you will be able to work, exercise, and perform physical activities. Certainly, you can. See, in fact, I encourage people to do your exercise, reduce your weight, reduce your sort of an fatty diet. And if you do exercise, swimming, walking, gym, then probably the muscle weakness is not there. So it helps also in people who even have a stage 4 disease. And as I said to you, you will be able to work, do exercise, and do all the activities. Will I have difficulty in controlling my bladder or bowel function after treatment? Obviously, the answer to this is, if you have done surgery in an experienced hand and experienced place, then the chance that you would lose your continence, what we call as control of urination, is very, very low. When this technology came in, a radical prostatectomy, it came almost 2.5 decades ago. The people were learning. A lot of credit goes to a doctor called as Dr. Patrick Walsh, who identified the anatomy of the prostate, the nerves, and credit goes to him. He taught people where the sphincter is, where the nerves are. And if you are an experienced surgeon, that chance that you will lose your control is very, very less. But if you go to the inexperienced place, inexperienced hand, I'm very open about it, then you can lose the control. What about radiotherapy? Post-radiotherapy also, you can have some side effects in terms of bowel function, meaning that you may have to go to stools regularly, quite frequently, and have frequency of micturition. Could this treatment affect my sex life? If so, how and for how long? Now, in terms of prostate cancer, as I told you, we make all attempts to preserve the nerves in localized disease, stage 1 and 2. But not at the compromise for preserving your sexual function. Now, whole idea is to get the cancer eradicated. So I may, with my expertise, try and preserve the nerves and give you a good sexual function. But obviously, the ejaculation part is going to go away. But I think the erection part and sexual function would be very well maintained. Now, the next question is, if I'm worried about managing the cost of the prostate cancer, who can help me? I think the best way would be to talk to your doctor honestly. Tell your all resources. Tell honestly what help you need. Because once we know, what the situation is, whether you're really short of funds, whether you really require sort of a long prolonging treatment, there are a lot of sort of charitable NGOs who come along and they come to us and they wanted genuine guys to be helped. But I urge each and everyone to be very honest about their resources and the practical difficulties. If you're honest, we'll certainly be able to help you. At the same time, the 2-tier cities and 3-tier cities, we run a program where we look at the economics and we try and rationalize treatment with the help of sort of local organizations. And also, the insurance companies are also there. There are certain government schemes. But what is important is being very honest and to give a clear-cut picture. Then it's much more easier to help. And there are many institutions, there are many sort of organizations who actually rely on our information. So you give a right information, will certainly help. There is one more question here, specific instruction to general population under the COVID for prostate cancer. I don't think there is anything different. COVID has just come as a pandemic, but don't delay the testing. If you're worried about urinary symptoms, go to your doctor, get the testing done. But there is nothing very specific. There have been a lot of people who have come along and they said, is it safe to do surgery on the prostate, during this COVID time? Obviously, yes. Now, almost a year and a half has passed away. We know what precautions to be taken. So don't delay your treatment. That's what I would say. Thank you very much. I think these were the questions. I was happy to answer those. Thank you once again. And if there are any more questions, I'm more than happy. Thank you once again. I hope you enjoyed the session.